Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So let's start our next question. Question number 11. That is, what is the concentration of sugar C12H22O11 in mole per liter? Right. So see what we have to find out. What is the concentration of sugar in mole per liter? Means we have to find out molarity. Right, molarity. If it's 20 gram are dissolved in enough water, right? If it's 20 gram is dissolved in enough water to make a final volume up to 2 liter. So volume is also given to us, right? Mass is also given to us. What we have to find out? We have to find out the concentration of the sugar which is dissolved in water in mole per liter, right? So we have to find out the molarity. So mass of sugar is given to us, that is 20 gram, right? Volume of sugar solution is also given to us, that is 2 liter, right? So we know what is molarity. Molarity is equal to number of moles of solute divided by its volume in liter, right? So this is the formula for molarity. So let us firstly we will find number of moles. Okay, so what is the formula to find the number of moles? So number of moles of sugar if we find from here, so that is mass, right? Given mass of the sugar or divided by molar mass, right? So firstly put mass which is given here, that is 20 gram, right? And what is the molar mass of sugar? We will calculate it. So molar mass of sugar C12, for carbon it will be 12, right, into 12, because 12 atoms of carbon present here, plus for hydrogen it is 22 atoms of hydrogen present here, into 1 atomic mass, plus for oxygen it is 16, but 11 number of oxygen atom are present here, so it will be multiplied by 11. So after calculating this value, we will get 342 gram per mole. So this will be the mass or molar mass of the sugar which we get. So to find out the number of moles of sugar, we need to divide mass by molar mass, right? And after that we will get 0.0585 मोल, राइट? तो हमें जो शुगर है उसके नंबर ऑफ मोल्स पता चल गई. अगर हम शुगर के नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए, राइट, हमारे पास वॉल्यूम ऑलरेडी गिवन है, तो वी विल अप्लाई द फॉर्मूला. सो मोलारिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, राइट? सो वी जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला. So molar concentration of sugar, that is molarity, is equal to number of moles of solute divided by volume in liter. So number of moles of solute that we have calculated is equal to 0.0585, right? And it is divided by the volume which is given to us, that is 2 liter, right? So after calculating the molarity, we will get the value 0.0293 mole per liter. So this will be our molarity. I hope this question is clear to you. Now let us move the next question. If question number 12, if the density of methanol is 0.793 kilogram per liter, right? Density हमें दी हुई है. What is its volume needed for making 2.5 liter of its 0.25 m solution, right? Density is given to us, हमें क्या फाइंड आउट करना है? उसकी वॉल्यूम निकालनी है, राइट? और क्या दिया हुआ है? 2.5 लीटर ऑफ इट्स 0.25 m मीन्स हमें क्या गिवन है?
मोलारिटी हमें गिवन है, राइट, और दिस इज द वॉल्यूम, राइट, वॉल्यूम इज ऑल्सो गिवन टू अस. So density is given to us 0.793 kilogram per liter, so we will convert it into gram per liter. Okay, so it will be equal to 793 gram per liter. Volume we have to find out, volume of methanol. Okay, we have to find out. So volume of solution is given to us, so that is we need for making 2.5 liter, right? So that is 2.5 liter. Got it? And after that, molarity of the solution is also given to us, that is equal to 0.25 m. So molarity of solution is given to us, so let us apply the formula of molarity, that is equal to a number of moles of solute divided by volume in liter. So this will be the formula, right? So what is given to us? Molarity is given to us and volume is given to us. So from here we can calculate the number of moles of methanol. So number of moles of methanol is equal to molarity into volume, right? So we will put the values here. Molarity of the solution is we know 0.25, right, into volume. Volume is also given to us. Volume of the solution 2.5 liter. So after multiplying these, we will get the number of moles of methanol. So it will be 0.625. So these are the number of moles of methanol which we get. Okay, see, we have to find out the volume, right? So volume कैसे find out कर सकते हैं? अगर हमारे पास मास है, राइट, और डेंसिटी हमें गिवन है, तो हम इजीली वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? सो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी. ओके, बट अभी हमें डेंसिटी हमारे पास है, बट हमें मास भी कैलकुलेट करना है, राइट? तो हाउ वी कैन कैलकुलेट द मास? हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लिए हैं, तो अगेन वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मोल्स. फ्रॉम देयर वी विल गेट द मास. ओके, सो लेट्स सी. number of moles of methanol is equal to given mass divided by molar mass, right? So how we can get mass from here? So it will be multiply number of moles into molar mass, right? So we will get the mass from here. So we are talking about methanol, so it is CH3OH, right? For carbon it is 12 plus for hydrogen it will be 3 into 1. For oxygen it will be 16, and for hydrogen it will be again 1, right? Okay, so after adding this we will get, it will be 32 gram per mole. So molar mass is 32 gram per mole. So we will multiply number of moles into molar mass, so we will get the mass of the methanol, that is equal to 20 gram. So here we get the mass also, and density we have also with us, so we will calculate the volume. Okay, so what is the volume of methanol? Is equal to mass of methanol divided by its density. So mass we have just calculated over here, it is equal to 20 gram. Okay, so 20 and divided by its density, that is 793 gram per liter. So after dividing this value we will get 0.25 liter, right? So this will be the volume of the methanol which we required to make the 0.2 m solution. So this will be the answer. I hope this question is clear to all of you. Let us talk the next question, question number 13. Pressure is determined as force per unit area of the surface, right? So we all know that pressure is equal to force upon area. So the SI unit of pressure, Pascal, is as shown below. So here is given 1 Pascal is equal to 1 Newton meter per square,
इफ मास ऑफ द एयर एट सी लेवल पे जो एयर का मास है वो क्या है 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर. Calculate the pressure in Pascal, right? So we all know that pressure is equal to force upon area, right? So what we can say? We can say pressure is equal to weight per unit area, right? So mass per unit area of air is given 1034 gram per centimeter square. So we can write it weight per unit area of the air, that is equal to 1034 gram per centimeter square into 9.8 meter per second square. Okay, so now we need to just change these units, right? So we have to change this gram into kilogram and centimeter square into meter square, right? Because we having this unit in meter square, right? So weight per unit area of air is equal to, we need to change this into gram into kilogram, so we will just shift or divide it by 1000, right? Or it will be shift 3 decimal place, so 1.034 kilogram divided by 10 to power minus 4 meter square, or into 9 meter per or after doing this, what we will get, after multiplying both these values, we will get the answer 1.01332 into 10 to power 5 Pascal. So here Pascal is the, we know that Pascal is the unit of pressure. So we need to find out the weight per unit area of the air. I hope this is clear to all of you. Let us see the next question. Question number 17. A sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform CHCl3, supposed to be carcinogen, right? तो जो ड्रिंकिंग वाटर है उसका जो सैंपल है वो कॉन्टामिनेट हो गया है क्लोरोफॉर्म से, विच इज़ कार्सिनोजन, मीन्स हैविंग कैंसर कॉजिंग एजेंट्स और कॉज कैंसर. द लेवल ऑफ कॉन्टामिनेशन वॉज, जो लेवल है कॉन्टामिनेशन का वो दिया हुआ है 15 ppm. ppm इज हेयर पार्ट्स पर मिलियन, राइट? इट इज पार्ट पर मिलियन बाय मास. Means if a value is given to us, or we have to calculate a value in mass percentage in very small units, so we use parts per million. So here what we used to have to do, express this in percent by mass. The first thing is given to us, जो value दी हुई है इसको percent by mass में, percentage by mass में हमें express करके दिखाना है, right? So we know that 15 ppm, 15 parts per million means 15 grams of solute per 1 million grams of solution, right? जो सोल्यूट है वो कितना है 15 ग्राम, और वो किस में, कितने सॉल्यूशन में है, डिसॉल्व है, दैट इज इन 1 मिलियन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज इन 1 मिलियन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. और 1 मिलियन वी नो, 1 मिलियन कितना होता है 10⁻⁶. ओके, तो हमें क्या करना है, इसको, इस वैल्यू को हमें मास परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है, राइट? सो परसेंटेज बाय मास क्या होता है, हमने पहले भी क्वेश्चंस में किया है. मास परसेंटेज अगर हम निकालते हैं तो दैट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, राइट? सो मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट देखो अभी जो हमने निकाला है 15 ppm मतलब 15 ग्राम ऑफ सोल्यूट.
तो मास ऑफ सोल्यूट हमारा कितना हो गया 15 ग्राम, राइट. वी विल राइट हियर 15 इन पर 1 मिलियन ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन, राइट. सो 1 मिलियन, तो सॉल्यूशन कितना हो गया हमारा 1 मिलियन ग्राम मीन्स 10⁻⁶. So it will be 10⁻⁶ into 100, right. So after calculating this, what we will get? We will get 1.5 into 10⁻⁻3%. So I hope this is clear to you. So this is how we can express 15 ppm into mass percent, right. So the second thing we have to find out, determine the molality of chloroform in the water sample, right. So we need to determine the molality of chloroform in the sample. So molality, we know that number of moles of solute divided by mass of solvent, that is in kilogram, right. So moles of solute divided by mass of solvent. तो मोलैलिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें मोल्स ऑफ सोल्यूट पता होनी चाहिए और जो सोलवेंट है उसका मास पता होना चाहिए, राइट. सो लेट अस फाइंड मोल्स ऑफ सोल्यूट. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला हम सभी को पता है, दैट इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, राइट. सो गिवन मास इज ऑफ सोल्यूट, that is 15 ppm. What it means? 15 gram of solute in 1 million of solution, right. 1 million gram of solution. So 15 million of solute, the mass of solute is given to us, that is 15. And molar mass, we have to find out the molar mass of chloroform. So that will be, molar mass of chloroform is CHCl3 is, for carbon it will be 12, for hydrogen it will be 1, and for chlorine it will be 35.5 into 3, because chlorine having 3 atoms here. So after calculating this value, we will get 119.5 gram per mole. So this will be molar mass of the chloroform. So after dividing by this value, what we will get? We will get 0.125 mole, right. So we get here number of moles of solute, right. तो क्लोरोफॉर्म की हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए हैं. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी नीड टू फाइंड आउट मास ऑफ सोलवेंट, राइट. तभी हम मोलैलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो मास ऑफ सोलवेंट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अगर हमारे पास सॉल्यूशन है और सोल्यूट है, राइट, तो हम उसको उसमें से माइनस कर देंगे. सॉल्यूशन में से हम किसको माइनस कर देंगे? सोल्यूट को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास सोलवेंट का मास आ जाएगा, राइट. सो मास ऑफ सोलवेंट हमें निकालना है किलोग्राम में, राइट. और क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ग्राम में, क्योंकि हमें दिया हुआ है 15 ppm, राइट. हमें 15 ppm दिया हुआ था. तो 15 ppm क्या होता है? 15 ग्राम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड इन पर मिलियन ग्राम ऑफ सोल्यूशन, राइट. तो 15 ग्राम ऑफ सोल्यूट. सो जो सोल्यूट था वो हमारा था 15 ग्राम, राइट. और जो सोल्यूशन था 1 मिलियन ऑफ सोल्यूशन था, दैट विल बी 10⁻⁶ ग्राम. सो इसमें से अगर हम इस वैल्यू को माइनस कर दें, तो 10⁻⁶ में से अगर हम 15 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मास ऑफ सोलवेंट, राइट. बट ये वैल्यू दी हुई है ग्राम में, हमें किस में फाइंड आउट करना है? वी नीड टू फाइंड आउट इन किलोग्राम. सो वी विल डिवाइड दिस वैल्यू बाय 1000. ओके. सो सी, after doing this, we will get 10⁻³ kilogram. As we know, 15 is very small value as compared to this value 10⁻⁶. So we just neglect this value 15, and we will find out a result in respect of 10⁻⁶. So we will get 10⁻³ kilogram. So see, we having a number of moles with us and mass of solvent with us. So we will find molality from here very easily. So applying or putting these values in the formula, we will get the molality. So molality is number of moles of solute divided by mass of solvent in kilogram. So we will put the values here, 0.125 divided by 10⁻�3. So after calculating this, we will get 1.25 into 10⁻⁻4 mole per kilogram. I hope this will be understood. This is understood by all the students.
Now let us move the next question. Question number 18. Express the following in scientific notation. Right? तो scientific notation हम पहले भी कर चुके हैं. तो हमें कुछ वैल्यूज़ दी हुई है, इनको हमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है. जैसे कि 0.048 फर्स्ट केस ले लेते हैं. 0.048 राइट. इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं तो हमें पता है कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं राइट, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनसे पहले अगर ज़ीरो हो तो वो क्या होती हैं, कंसीडर नहीं होती. दे आर नॉन सिग्निफिकेंट. सो we will convert this in scientific notation. We just shift this decimal over 3 points, 1 2 3. So we can write it 4.8 into 10 raised to power minus 3, because we are just shifting the decimal in 3 place towards the right. अगर right की side अगर हम move कर रहे हैं तो माइनस हो जाएगा राइट. अगर हम लेफ्ट की साइड मूव कर रहे हैं तो इट विल बी +3. Okay, I hope this is clear. So move to the next question. So that is 8008 right. So we need to convert this right. तो अब हमें किसकी साइड शिफ्ट करना है, देखो यहाँ पे हमने राइट की साइड शिफ्ट किया था राइट, 3 डेसिमल्स. अब हमें 3 डेसिमल्स लेफ्ट की साइड शिफ्ट करना है. तो 1 2 3 यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे तो इट विल बी 8.008 राइट. तो डेसिमल हम इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहे हैं, देखो लेफ्ट की साइड. तो हमने कितने पॉइंट शिफ्ट किए, 1 2 3 3 डेसिमल पॉइंट शिफ्ट किए हैं राइट. तो हम क्या कर देंगे, उसमें 10⁻³ ऐड हो जाएगा राइट. सो इट विल बी प्लस 10⁻³. Likewise, we will do the next question. So here in this statement you see there are 1 2 3 significant figures right. 3 significant figures. अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद अगर यहाँ पे डेसिमल होता राइट, अगर डेसिमल होता है तो जो उसके डेसिमल के बाद जो ज़ीरोज़ होती हैं वो भी क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं. बट अगर यहाँ पे डेसिमल के बिना ही जो ज़ीरो हैं, जो अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करें तो वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगी राइट. सो इसमें हमें सिंपल साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है. तो हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5. अब हमने देखो कितने पॉइंट शिफ्ट किया, 5 पॉइंट शिफ्ट किया राइट. सो वी कैन राइट